Okay. Okay. So first of all, what we are dealing with is rotational motion, and this is called as rigid body dynamics. Okay. So why it is called rigid body dynamics? Because here we are dealing with rigid bodies. Okay. So we have talked about something like called properties of solids. ठीक है, उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था there are some bodies which can get deformed. Okay, but here we are talking about the rigid bodies. So what are rigid bodies? Rigid bodies are those which did not deform, या फिर which do not deform. I should write it like which do not deform. And what is the meaning of deformation? The change in the shape while you apply some forces. Okay, now the point is this topic and Newton's law, both the topics are called dynamics topics, right? Because there are only two branches to mechanics. One is kinematics and one branch is dynamics. So initially we studied kinematics, then we studied Newton's law. Newton's law is the effect of the force that are being studied. That dynamics was also rigid body dynamics, no doubt about that. But it was not complete dynamics actually, because जब हमने न्यूटन लॉ पढ़ा था तब हमारा ध्यान इस बात पे था कि what is the effect of the force, and we were looking at the translational effect of the force, not the rotational effect. ठीक है, तो rotational effect जो होता है, it could be like it's a rigid body. If I am putting a force like this, it is rotating. But this effect was not taken care of in Newton's law, right? What effect was taken care of was, this is a body, I am putting a force like this, and this is simply translating like this. So Newton's law was also dynamics, but it was not the complete dynamics. The complete dynamics is RBD. In RBD, you will be talking about the rotational as well as the translational effects on a rigid body. Okay, so how is it different from Newton's law? Because here you are also taking into account the rotational effects. Okay, now you know what translational effect को कौन cause करता है? Force. बहुत simple है, जैसे कि ये है, right? इसमें अगर translation लेके आना है तो there will be like force. Force is causing the translation effect. Rotational motion को कौन cause करता है? Can you tell me? Can you tell me, guys? Rotational effect कैसे cause होता है? Sir, force at a particular point of the body other than center of mass. Okay, Arya, what is your opinion? रोटेशनल इफेक्ट को कॉज करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत होती है? कैन यू टेल मी आर्या? क्या हुआ? रोटेशनल इफेक्ट को कॉज करना है, व्हाट थिंग्स डू आई नीड? आर्या, कैन यू हियर मी? यस सर। आई एम सिंपली आस्किंग यू, अगर मैं रोटेशनल इफेक्ट कॉज करना चाहता हूं तो व्हाट इफेक्ट्स डू आई नीड? व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली? Sir, a body which can rotate. Okay, see, suppose I am giving you an example here. Just have a look at this example. I think my table part is visible now. I take this bottle. ठीक है, बॉटल विजिबल है सब लोगों को, राइट? अब इसके ऊपर ये बॉडी है, मैंने यहां फोर्स लगाया, तो दिस इफेक्ट इज व्हाट? ट्रांसलेशनल इफेक्ट, राइट और रॉन्ग? दिस इज द ट्रांसलेशनल इफेक्ट. बट यू सी, इफ आई एम चेंजिंग दिस फोर्स and I put this force over here, it will be like rotating about this point. Are you getting it? So the force itself is capable of producing translational as well as rotation depending on the position where the force is placed. ठीक है, जैसे दरवाजा है, ठीक है, अब दरवाजे का अगर हैंडल पकड़ के खींचूंगा तो खुल जाएगा, बट हैंडल से बिल्कुल अंदर जाते हुए एक्सिस पे जाके फोर्स लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा. तो आपको अगर रोटेशन प्रोड्यूस करना है तो फोर्स के साथ साथ ये भी मैटर करेगा कि फोर्स आप लगा कहां पे रहे हो. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो अगर हमें बॉडीज के अंदर
ट्रांसलेशन पढ़ना है तो ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फोर्स, सिर्फ फोर्स है। लेकिन अगर आपको रोटेशन पढ़ना है तो ट्रांसलेशनल के साथ साथ कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है? पोजीशन ऑफ द फोर्स। जैसे कि अब ये पेन है, ठीक है, इस पेन पे मैंने यहां फोर्स लगाया, बिल्कुल सेंटर पे, देखो ध्यान से, एकदम सेंटर पे फोर्स लगाया, तो ये सिंपली आगे की ओर बढ़ रहा है। अब मैं यहां फोर्स लगा दूंगा तो ये आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है। सो द पोजीशन ऑफ द फोर्स कैन डिटरमाइन वेदर द बॉडी कैन रोटेट और नॉट along with the force. Is it okay? तो बेसिकली अब जो हम डायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, उसमें फोर्स का रोल तो रहेगा, साथ साथ फोर्स की पोजीशन का भी रोल रहेगा, ठीक है? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आरबीडी. सो नाउ along with force we are also interested in the position of application of force. Application of force. इन दोनों चीजों में हम इंटरेस्टेड है, फोर्स में और पोजीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में. ये दोनों चीजें मिलकर कौन से इफेक्ट्स को जज करती है? रोटेशनल इफेक्ट्स को, रोटेशनल इफेक्ट. और अगर हमें सिर्फ ट्रांसलेशनल इफेक्ट देखना हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं? सेंटर ऑफ मास. अगर हमें सिर्फ ट्रांसलेशनल इफेक्ट देखना हो सेंटर ऑफ मास. नहीं, तो हम फोर्स यूज करते हैं और फोर्स को सीओएम पे लगाते हैं. तुम यहां पे सही हो, राइट? So if we want to have a look at the rotational effect, we need force and the actual position of the force. But if we want to judge only the translational effect, then what is important is force applied on the center of mass. Force applied on the center of mass. That becomes important for us. Then it becomes irrelevant कि force कहां लग रहा है. ठीक है? तो जैसे अगर मैं ये बॉटल ले लूं, अगर मुझे इसमें ट्रांसलेशनल पढ़ना है तो मैं फोर्स यहां लगाऊं या यहां लगाऊं. ट्रांसलेशनल पढ़ने के लिए आप सारा का सारा फोर्स उठा के सेंटर ऑफ मास पे लगा दो और F बराबर ma इक्वेशन लगा दो. वहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो किसका एक्सेलरेशन होगा? सेंटर ऑफ मास का. लेकिन अगर आपको इसमें रोटेशनल इफेक्ट्स पढ़ने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोर्स कहां लग रहा है. और वही सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं. तो if I conclude my introduction part, then I will say that in order to get the complete idea of the dynamics, along with force, the position also becomes important. Okay, fine. Now, rigid body. So how can you define a rigid body physically? Guys, can you tell me? Arya, will you like to tell me how can a rigid body be defined? Sir, in which the smallest particle is very close to each other and cannot be deformed. Okay, so the definition you are giving me right now is that of the solids actually. Solids may the intermolecular forces are so strong that the molecules are tightly packed. Okay, that is okay. But basically I can, then what is the difference between calling it solids and rigid body actually? So when you call it a rigid body, I expect a different definition from you. For example, is this a rigid body? Tell me, is this a rigid body? Aryan, tell me, is this a rigid body? The mobile. It is not. It is not a rigid body. If I apply forces after a certain extent, it will break, right? Yes, sir. And the distance between the particles will change, right? So it is not an ideal rigid body. An ideal rigid body is one on which whatever force you apply, the intermolecular distances never change. That is the ideal rigid body. Sir, guys, are you getting what I'm saying? Again? Sorry? Sir, why that is not a rigid body? It is not a rigid body. It can be treated as a rigid body for a small amount of forces. But if I put it under a crusher, will it be a rigid body? No, sir. Because crusher will apply large amount of forces and it won't be able to bear that. Okay. So basically, yes. Ideal rigid body is what? Ideal rigid body is, ideal rigid body क्या होती है? Ideal rigid body is
in which there is no deformation or change of intermolecular distance even after applying large amount of force. Large amount of force. That is called ideal rigid body. That is called ideal rigid body. ठीक है. अच्छा, अभी देखो क्या होगा. जैसे कि ये बॉडी मैंने ले ली. अब बेसिकली अगर इस पे मैं कोई भी दो पॉइंट्स पकड़ लूं, ए और बी, इनके बीच की दूरी अगर एल है तो वो दूरी हमेशा एल ही बनी रहेगी. Even if I apply forces, right, that L will never change. L will never change even after applying large forces. Even after applying large forces. Are you getting what I'm saying? That is a rigid body. अभी इतनी बात समझ में आ गई? सर रियलिटी में कोई रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती ना? नहीं करती. आइडियल रिजिड बॉडी नहीं होती है, बट एक गिवन फोर्सेस के लिए आप यू कैन ट्रीट दैट बॉडी लाइक अ रिजिड बॉडी, बट देयर इज नो आइडियल रिजिड बॉडी. It's fine. Yes, sir. Now I am diving a little deep based on this concept. The core concept is अगर मैंने कोई rigid body ले ली तो उस पे जो दो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के बीच की दूरी ना तो बढ़ेगी ना कम होगी. इतना समझ गए तुम लोग? उस आधार पे अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि माना मेरे पास ये एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी में दो पॉइंट्स हैं ए और बी. इन दोनों को हम ये ऐसे ज्वाइन करती हुई लाइन है और यहां पर ए की वेलोसिटी कुछ ऐसे दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री के एंगल पे, और बी की वेलोसिटी कुछ दे रखी है v 53 डिग्री के एंगल पे. ठीक है, एक रिजिड बॉडी के अंदर इस प्रकार से वेलोसिटीज दे रखी है आपको. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? Sir, can you repeat the question? The question is, this is an ideal rigid body. Ideal rigid body. That simply means that the distance between A and B cannot change. Now, in this particular body, I have taken 2 points A and B. I have given certain velocity to point A and there is certain velocity with point B. And they are pictorially represented as shown on the screen. I am simply asking, what is the value of V? That is what my question is. The 40/3. The concept you applied? I just want to know the concept you applied. I broke it into components first. Okay. And then because the distances will never change, therefore 10 cos 37 will be equal to V cos 53. Perfect. That is the perfect approach. So basically, the good thing is, like, I am very sure कि इसके along there will be no change of the distance along AB line. So I will get 10 cos 37 is equal to V cos 53. From here you can get V. Arya, is it also clear to you? Yes, sir. Fine. But one thing is very sure, the perpendicular components may not be the same and it is not required. Perpendicular components may be different. Like see,
Suppose I take this mobile and I rotate it like this with some omega. Then the velocity of this particle is v barabar r omega, and the velocity of this particle is v barabar r omega. R is different. जो पार्टिकल दूर है उसका r ज्यादा है, तो उसका v भी ज्यादा होगा. ये सिंपल एग्जांपल लेता हूं. रिजिड बॉडी है मान लो. अभी इस रिजिड बॉडी को ऐसे घुमाया, तो इस रिजिड बॉडी पे जो ये पॉइंट है उसका वेलोसिटी क्या होगा? आर ओमेगा. लेकिन आर कितना लोगे? एल के बराबर. और ये जो पॉइंट है मिड पे, उसका आर कितना लोगे? एल बाय 2. तो अब तुम जैसे इसको घुमा रहे हो तो ये पार्ट एल बाय 2 ओमेगा आ रहा है और ये एल ओमेगा आ रहा है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक रॉड ले ली, इस रॉड को ओमेगा वेलोसिटी से घुमाया, तो इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी आया ओमेगा एल बाय 2 और इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी आया ओमेगा एल. दोनों डिफरेंट आ रहे हैं. अरे बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें पॉसिबल है, हाँ. बट ऐसा नहीं हो सकता कि इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग उनका कुछ वेलोसिटी है, इसका भी 0 इसका भी 0 है. अगर इसका 5 होता तो इसका भी 5 होना बनता था, क्योंकि उनके बीच का दूरी चेंज नहीं होगा, बट परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है. अभी क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं? Yes, sir. आर्यन? Yes, sir. ओके. सो नाउ माय क्वेश्चन इज, अब मेरी क्वेश्चन को ध्यान से सुनना. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं. ये बॉडी तुम्हें सामने दिखाई दे रही है, देखो ये बॉडी दिखाई दे रही है. अगर मैं ए पर बैठ जाऊं और बी पॉइंट को देखूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं जो कि जेई में काफी पूछी जाती है. ए पॉइंट पे बैठ जाऊं और बी पॉइंट को देखूं तो मोशन कैसा दिखाई देगा? अगर कॉपी और पेन का यूज करोगे तो यू विल अराइव एट अ बेटर आंसर. ए पे बैठ जाऊं और बी को देखूं, मैं रिलेटिव मोशन को बीच में लेके आ रहा हूं. आई एम वॉचिंग बी रिलेटिव टू ए, दैट मीन्स वी बी ए. सर क्या क्वेश्चन क्या था? बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं. क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं ए पॉइंट पे बैठ जाता हूं और ए पॉइंट पे बैठ के मैं बी को ऑब्जर्व करता हूं, what kind of motion path I will observe? That is the question actually. Motion path. Yeah, of course. Will it be a straight line or something of that sort? Like that was I'm expecting from you guys. थोड़ा सोचेंगे सब लोग. मैं अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्क्रीन पे. If we are observing point B sitting on point A, sitting on point A, what kind of motion path is expected? Go ahead.
Okay, Aryan, did you come to a conclusion? So अगर मैं A पे बैठ के B को देखूंगा तो I will be observing VBA, which is VB vector minus VA vector, right or wrong? Yes, sir. Now अगर मैं A पे बैठ जाता हूं और B को देखता हूं तो एक बात तो पक्की है कि ये दूरी तो चेंज नहीं हो रही है। ये अगर L थी तो ये तो L ही रहने वाली है। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, B का जो वेलोसिटी मुझे दिखाई देगा वो अलोंग द लाइन तो दे नहीं सकता, क्योंकि अलोंग द लाइन A भी सेम से चल रहा है और B भी सेम से चल रहा है। Yes. आर्या एंड आर्यन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट अगर वो अलग अलग होंगे तो मेरे को VBA या तो इधर दिखाई देगा या VBA मुझे इधर दिखाई देगा। अलोंग द लाइन तो दे नहीं सकता, राइट और रॉन्ग? अब देखो, ये जो VBA होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा एंड दिस विल बिहेव लाइक अ रेडियस। सो द मोशन ऑफ पॉइंट B as anticipated sitting on point A will be a circular motion. Because this behaves like a radius. As these points cannot move either closer or farther, the B point can simply move perpendicular to the radius part. So the motion of B sitting on A cannot be a straight line. It can only and only be a circular motion of, or it could be at rest. If the body is like this, suppose. Now A and B, with respect to A, B is at rest, no doubt, right? But if any other case, the motion of B with respect to A will only and only be circular motion. If I sit on B and observe A, then also it will be a circular motion. So in conclusion, in a rigid body, in a rigid body, if I sit on some point and observe another point, the motion of the another point cannot be other than the circular motion. It will be simply circular motion. It is a very, very peculiar property. If I am observing from the ground, it can be a straight line. I'm not saying that. But if I am observing from a point on the body, another point on the same body, the motion will either be rest or circular motion. That's all. Guys, did you get my point? Sir, Yes, can you sir. explain again? Yeah, I will explain it. Once let me conclude. Probably after reading that conclusion, you may think of it and it may get absorbed in your mind. So the conclusion is, if we track some point on a rigid body, relative to another point on same rigid body, the path tracked can only be circular path. This is my conclusion. Now, I am explaining it to you once again. See this diagram. In this diagram, you have 2 points V and VB. Sorry, you have 2 points A and B. There are different velocities, VA and VB. But the component along the line joining, VA cos theta 1 is equal to VB cos theta 2. The component along the line joining. Because the distance between them cannot change, it's a rigid body. Now, this is the velocity of A, this is the velocity of B. But if I sit on A and observe B, these two will cancel out. And whatever velocity I will get will be perpendicular to this length L. So the motion of B will be like making a circular motion about point A with L as radius. You know that the linear velocity in circular motion is tangential to the path, right? You know that property. V barabar omega R. So in the similar manner, if I look at this, then probably
this motion of B with respect to A seems to be like circular in case. Now are you getting it what I'm saying? If you want to comprehend, you can take your time and you can read the paragraphs probably as written over here. You may get a better sense of it, what I'm saying. Oh, so because it is tangential, therefore it is going in a circular path. Yeah. Therefore, the predictive path is circular. I'm not saying it's going in a circular path. With respect to A will be like wandering whether B is doing a circular motion. From the ground, we are saying that B is not doing circular motion. But after sitting on A, you cannot see any other path. That is what I'm trying to say. Don't be in an illusion that B is going in a circular path. No, it is going in a circular path when seen from A, not from the ground. Now is it clear to you? बताओ भाई. अभी क्लियर हुआ क्या? आर्यन तुझे क्लियर हुआ? यस सर। सर वो मैं अभी फोन से कनेक्ट किया है, वो लाइट चली गई। ठीक है.